हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर फिल्मों की वजह से कम और सियासी बयानबाजी की वजह से ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं। अब अगर हम आपसे ही पूछें कि स्वरा की आखिरी रिलीज हुई फिल्म कौन सी थी या कौन सी फिल्म में वो नजर आने वाली है, क्या आपको पता है? शायद नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए कि वो किस विचारधारा का प्रचार करती हैं, वो बीजेपी को लेकर क्या राय रखती हैं, तो आपको जरूर पता होगा। स्वरा पिछले कुछ वक्त से राजनीतिक मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। हाल ही में स्वरा का दर्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने फूटा। स्वरा ने ममता के सामने मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया, यूएपीए को लेकर बात की, जिस पर ममता ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी की सत्ता आती है तो वो यूएपीए को हटा देगी। स्वरा ने ममता से क्या कुछ कहा, यह आपको आगे विस्तार से सुनवाएंगे, लेकिन अपने इस बयान को लेकर स्वरा किस तरह से ट्रोल हो रही हैं, ये आप देखिए। एक यूजर ने लिखा, I used to think Swara Bhaskar is just a paid influencer who will just tweet anything she gets paid for. I was wrong. Money is not everything for her. She actually wants to see Hindus getting murdered. एक यूजर ने लिखा, ममता से स्वरा और सभी बेरोजगारों ने कहा हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए। ममता ने कहा बरनौल मलिए और काम पर चलिए। एक और यूजर ने लिखा, शी इज जस्ट पब्लिसिटी की भूखी। एक यूजर ने लिखा, डियर स्वरा, I am a fan of your acting skills. Believe me, focus your energies there rather than appearing as sidekick in movies and occasions like this. You have no potential in politics. Try in Bengali film industry. स्वरा को ममता के सामने दुखड़ा रोने के बाद देखकर लोग उन्हें कुछ इसी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। और चलिए अब जाते जाते आपको सुनवाते हैं ममता के सामने स्वरा ने क्या कुछ कहा था। It is all our burden, and I assure you, ma'am, that everyone in this room is doing their bit. There are many older, illustrious people who've spent their lives on this, but allow me to take a minute to introduce you to some of the younger people who have risked their careers and their employment and very livelihood to keep resistance in their own small way alive. Munawwar Farooqi is here. He has spent 1 month in jail. Stand up. So he spent a month in jail for a joke he didn't tell. But Raj is here. He runs a performance space that has been vandalized continuously for hosting people like Munawwar, like Aditi Mittal, like Agrima Joshua, who was attacked. Rija Chadha is here. Kubra Seth is here. Arpita, Ashwini sir, Avinash ji. All of these people are working in the film industry, facing a lot of resistance to tell stories where what is happening in India will find a place. Fahad is an activist who has multiple FIRs on him. We are in a situation today, and I'm sorry I'm repeating what we all know, but it's a lived experience. We are in a situation today where for a common citizen like me, we either on one side, what are our options? What are we experiencing? On one side, there is the mob, completely unaccountable because the ruling dispensation has found a way to use the mob to its liking, and the police and the state seem to be completely okay with allowing that. On the other side, you have the state that uses arbitrary power and is distributing UAPA and sedition charges like it is prasad of a god we don't want to pray to but are forced to bow down to. This is our reality. I'm sorry I'm a little emotional. People ask why there is no Meryl Streep in India. There is no Meryl Streep in India because Meryl Streep could stand in front of the president-elect of her country and critique him in the harshest way and not a hair on her head was harmed. We are all unemployable today.